Landscape. Hello and a very warm welcome to all of you, dear viewers. You watching your favorite YouTube channel, Learn English with Akhlaq Ahmed, and I'm your host, teacher, and friend, Akhlaq Ahmed, an English teacher from AMU, and it's my pleasure to welcome all of you. That is, those who are watching me on YouTube, and of course, my students um, from 11B. Before I start this session, I'd like to request you all to subscribe to the channel, press the bell icon, and of course, you know, like the video as well and share it. Please drop a comment if you have time, and also, you know, if you dislike it, you can press the dislike button, but do let us know for what reason you disliked it. And I'll add my WhatsApp number so you can comment and ask questions in the form of voice notes on WhatsApp. I'd be happy to answer your questions. There might be a bit of a delay in that, but I'd try my level best to satisfy your queries as well. Battery level 60%. Now, dear viewers, you see, uh, the subscription level is not rising to the extent uh, to which I had expected, and of course, the like also are not increasing, and the sharing is of course nil. So, you know, uh, your appreciation, your acceptance obviously would encourage me and help me uh, to continue bringing you such videos for you, which are informative and useful for you, for general viewers also, and especially for the students of class 11th and 12th. So, those who are following CBSE course, and also, I intend to start a spoken English series. So I need your support. So do subscribe in large numbers, and of course, that would be very encouraging for me. Uh, that would give me kind of succor to and inspiration also to continue doing this work. Okay, I hope you would you would not really disappoint me, and of course, give me a chance to thank you all for this purpose. You would gratify me. So now, in today's session, we're going to discuss something which is very useful as far as uh, spoken English is concerned, and the use of English also in general is, of course, very much dependent upon what we are going to talk about today. In the series of spoken English, I have already earlier discussed the use of determiners that would help you quite a lot to use important words in a correct manner, and of course, um, improve your spoken English. Now, today we are going to actually talk about modal auxiliaries, which are very important and very commonly used in speech, also in writing. And this is, of course, prescribed also for class 11th CBSE students. So useful for both. Now let's come to the topic without much ado. Um, you see, first of all, let's understand the word modal. This word, um, modal, in fact, some people pronounce it as modals, some say model. So it's not the model, it's not like uh, model 236 as you have the models of various bikes and cars. It's not that. This word, in fact, originates from the English word mode, M-O-D-E, which means a pattern.
you know, a pattern, mode of writing, mode of speech, mode of communication. यानी आपकी mode of communication क्या है? Are you communicating through uh, say speech or writing, or let's say online mode, offline mode? आजकल तो ये expression बहुत common है. So from mode we get the word modal. And auxiliary, as you know, means that which helps or a helper. So in grammar, we have auxiliary verbs is, are, am, was, were are different forms of be, which are called auxiliary verbs. Auxiliary verbs are verbs which help to form the tense and questions. Now, modal auxiliaries are verbs which can be used both as auxiliaries and as modifiers. That is, sometimes they, help us to form the moods of the verb, and sometimes they are used as the past tense of a verb in reported speech. But at the same time, they can also be used as complete verbs, and they modify the meaning of the verb with which they are used. So let's say that they help to form the questions and also to express a wide variety of meanings. These meanings may relate to a wide variety of moods and attitudes towards a possible state or action. तो यानी ये डिफरेंट मूड्स बनाने में मदद करते हैं, और डिफरेंट जो वर्ब्स होते हैं उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं. तो एडवर्ब्स नहीं होते, ये होते वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनको यूज़ करने से जो वर्ब का जो जो एक्चुअल मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, दे आर ऑलवेज यूज विद other verbs. Now, the meanings of which they modify in one way or another. And remember, they do not have an S form or ES form or ING form or participles. ठीक है ना? जैसे हम goes, buys, brings करते हैं, या going, sleeping, तो ये S या ES इनमें नहीं लगता. इसी तरह से ING भी नहीं लगता, ED भी नहीं लगता. And interestingly, they may be used to talk about present, past, and future. Sometimes one particular verb may be used in, let's say, to express present and to express future also. And another form of that verb may um, also be used for past. So ये सारी चीजें हम देखेंगे. Now let's see. You see, generally these modals are 12 in number. That is, would, should, could, may, might, must, ought to, dare, need, USE plus two, TO2, used to, and used to, USED plus TO2, used to and used to. So these are 11, and according to some scholars, can is also a modal. So we'll see that. And on the pattern of used to, they say that have to, has to, had to, and will have to are also modals. हालांकि ये हम देखेंगे when we will come to these verbs, that have to and has to and will have to. Ye will have to is more common in Indian English. Otherwise, has to and have to are usually
used in British English and at international level. So this is the a kind of a background to um, the modals. Now let's discuss the use of these verbs one by one. You're very important. These are very important. You see, and this might be the first part of modals because we may not be able to cover all the modals in just one sitting because the video would be too long. So, uh, most probably I'll cover it in two parts. I forgot to mention it in the beginning. So, let's start now. Um, let's first discuss should. Should expresses various meanings. One of its meanings is advisability, and it's usually equal to ought to. तो पहले तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ought to और should में क्या डिफरेंस है. Advisability. Let's have an example. If you see a person sneezing, coughing, and you know, um, pressing his head again and again, कोई शख्स है जो खांस रहा है, चीख रहा है, सर पकड़ रहा है अपना, that means, so you would say, you are sneezing, you should consult a doctor. That is, you seem to be ill, so the advice to you is that you should consult a doctor. Now, see, should has added the meaning of advisability to the verb consult, right? So, this is one meaning. Now, we come to other meanings. The other meanings which should adds to other verbs depending on the context. Among them, one is obligation. You see, obligation. For example, the marks list should be in the office by 10 a.m. on Saturday. That is, it is obligatory, it is compulsory, or, um, you know, it is the duty of somebody to make the list available in the office by 10 o'clock on Saturday. यानी मार्क्स लिस्ट ऑफिस में सुबह 10 बजे सैटरडे में होनी चाहिए. अभी नहीं है. It's not Saturday now. We are talking about future. What should happen in future? So duty. I'll give you more examples of duty later on. But first let's focus on another meaning. Expectations. देखिए ये बहुत ही useful है. For example, it's 10 o'clock. The plane should be landing very soon. ठीक है ना? Um, that is, if suppose the plane lands at 10:10, so it's 10 o'clock, so we say that the plane should be landing very soon. So should plus be plus ing form of the verb, should be landing very soon. Now, for another example, you want to know the fare to Chennai? This is a question. That is, do you want to know the fare to Chennai? It should be about rupees 6,000. It should be about rupees 6,000. क्या मतलब हुआ? बी में क्या ऐड कर रहा है ये? That is, it is expected to be about 6,000. ऐसी यानी कि
आशा की जाती है, ऐसी संभावना है, ऐसी ऐसी जिसको हम कहते हैं कि तवक्को है कि ये 6,000 होगा। हमें कंफर्म तो नहीं मालूम, बट वी एक्सपेक्ट दैट इट इज 6,000, सो इट शुड बी अबाउट 6,000। तो अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यू सी, we will have more examples of should. Let's see. Uh, should, uh, as I said, expresses duty and it can be used for past also if we add have to it. अभी तक हमने देखा कि should जो है वो फ्यूचर को रेफर कर रहा है, आने वाले वक्त में जो चीज़ें होनी है, जैसे यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इट शुड बी होना चाहिए, should be landing very soon. This means that the plane has not yet landed. अब इस एग्जाम्पल को देखिए, I should have attended the meeting this afternoon, but I forgot. यानी मुझे इस आफ्टरनून में जो मीटिंग थी वो अटेंड करनी चाहिए थी. इट वॉज माई ड्यूटी बट आई फॉरगॉट. तो शुड के साथ ये इस तरह यूज़ हो जाता है. और क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है, वो डिस्कशन फिर हम बाद में कभी करेंगे. दैट वुड प्रोलॉन्ग डिस्कशन कि हम इस केस में शुड को पहले ले आते हैं. जैसे आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, शुड आई हैव अटेंडेड द मीटिंग, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी. नाउ फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी, वी शुड ओबे द लॉज, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड बी केयरफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स, you should keep your promises, you should not say so, you should control your temper, ही शुड हैव नोन बेटर. तो ये मैंने आपको आई यू ही वगैरह सबके साथ मिसालें ये दिखा रहा हूँ मैं. ही शुड नॉट बी अलाउड टू नेग्लेक्ट हिज स्टडीज, यानी उसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू नेग्लेक्ट हिज स्टडीज. दिस इज समवंस ड्यूटी. देन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, देखिए, लॉ मेकर्स should not be lawbreakers. So, you see, all these examples show that should express duty. Uh, then, should have other usages as well. Um, now, should can also be used, uh, should is used, or rather was used in um, reported speech as the past tense of shall. अब ये इस्तेमाल अभी भी हो जाता है, जैसे ही सेड आई शैल गो, ही सेड दैट ही शुड गो. ये पुरानी इंग्लिश में, मतलब पुरानी से मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश दैट वाज स्पोकन अबाउट 100 years अगो. अब करंट इंग्लिश यूसेज में, हाँ, एक बात ये याद रखिएगा कि पहले हम विल और शैल में फ़र्क करते थे. यू सी, हम कहते थे आई शैल गो, ही विल गो, मगर अब ये करंट इंग्लिश यूसेज जो है उसमें विल ही इस्तेमाल होता है. शैल इज रेयरली यूज्ड, and by Americans shall is almost never used. Britishers do use shall but very very seldom, बहुत कम. तो पहले जब हम कहते थे आई शैल गो, ही विल गो, अगर हम कहते थे आई विल गो तो विल से मतलब सर्टेनिटी होता था, यानी 100% जाऊंगा. और ही शैल गो,
यानी वो जाएगा ही जाएगा, ये मतलब होता था। लेकिन अब ये मतलब नहीं होता। अब विल ही इस्तेमाल होता है आई के साथ भी। आई विल गो आपने सुना होगा, नोबडी सेज आई शैल गो। ये बहुत कम यूज होता है और रिटन इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से पास्ट टेंस शैल का शुड बन जाता है जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। नाउ one thing, you see, I'll come to that just a minute. So there is another usage of should. Should is used in subjunctive mood, you know, as a helping verb uh, to form the subjunctive mood if we are talking about a condition which uh, is opposite to truth. अब यहाँ पे पहले हम तीन बेसिक कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इंग्लिश में देयर आर अबाउट 20 types of conditional sentences, and in it's very kind of difficult to express conditions in English. लेकिन फिर भी तीन जो हैं वो मेजर हैं। अगर आप ये तीन सीख लेते हैं तो इनसे आपका ज़्यादातर जो है वो काम चल जाएगा, और फिर बाद में आप बाकी इनके बेसिस पे दूसरे भी सीख सकते हैं। तो पहले हम ये तीन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद शुड की डिस्कशन पे आगे आते हैं, क्योंकि इनका जिक्र बार बार आएगा। एक ये चीज़ और दूसरे मूड्स भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो the first conditional sentence is, the first structure is, if he comes I will go. अब ये इस सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज जो है वो एक शर्त है। इफ ही कम्स, अगर वो आता है। देखिए ध्यान रखिए कि ही हैज नॉट येट कम, एंड वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। सो इफ ही कम्स, ये कंडीशन है हमारी। अभी वो आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज नॉट अगेंस्ट ट्रूथ। आई विल गो, तो क्या होगा, मैं चला जाऊंगा। सपोज there is a situation where, for instance, let's say my friend, I'm waiting for my friend so that he may stay with, uh, my uncle who is ill, you know. So, and, the uncle says, what would happen if I'm alone? What will happen? So, your friend has not yet come. I say, if he comes, I will go. यानी अगर वो आता है तभी मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। सो दिस इज कंडीशनल सेंटेंस नंबर वन। नंबर टू, इफ ही केम आई वुड गो। अब मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ी सी सर्टनिटी बदल गई। अब देखिए पास्ट का स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, केम, तो इसीलिए विल जो है वो वुड में, यानी रिजल्ट जो है वो बजाय विल में एक्सप्रेस करने के वुड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वुड को। सो इफ ही केम, अगर वो आया, अगेन ही हैज नॉट येट कम, अगर वो आया, देन आई वुड गो। अब चूंकि पीछे इफ लगा रखा है इसलिए यहाँ पे देन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इफ ही केम आई वुड गो। अब आप कहेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
कहीं पे आपको इफ ही कम्स यूज करना पड़ेगा और कहीं पे आपको इफ ही केम यूज करना पड़ेगा. वो दैट डिपेंड्स वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट और इवेंट्स इन द प्रेजेंट. यू नो, किस कॉन्टेक्स्ट में आप पीछे वाले जुमले बोलते चले आ रहे हैं. तो ये आप ध्यान करके देख लीजिएगा. कुछ पढ़ रहे हो, इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो ध्यान करके देख लीजिएगा कि इफ़ ही कम्स कहाँ पे आ रहा है, इफ़ ही केम कहाँ पे आ रहा है. बिकॉज यू नो, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड अभी चीज़ें नहीं है और आपको कन्फ्यूजन होगा जितना मैं अलग बताऊंगा. अभी जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये स्ट्रक्चर आप सीख लें. ओके, देन द थर्ड वन, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन. अब देखिए सारा सिनेरियो चेंज हो गया. अब हमने यहाँ पे परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, वो भी पास्ट परफेक्ट का. इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता. नाउ इट इज द मैटर ऑफ पास्ट, यानी he didn't come. I would have gone. Notice that will is replaced by would and we have added have to it. Result जो हम इसका describe कर रहे हैं वो would में describe कर रहे हैं. So mostly the result of a condition is described in would in the past. तो if he had come, I would have gone. इसको हम यूं भी कह सकते हैं had he come, I would have gone. ये क्वेश्चन नहीं होगा. Had would be equal to if. या if की जगह provided भी लग सकता है. Provided he had come, I would have gone. Provided he came, I would go. Provided he comes, I will go. यूं भी हो सकता है. Anyway, these are the three conditionals. अब इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स के वेरिएशंस हैं सारे. अब कंडीशंस दो तरह की हो सकती हैं. एक तो वो जो कि पॉसिबल हो सकती है, एक वो जो पॉसिबल ना हो सके. इसकी एग्जांपल अब देखिएगा. इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. ये देखिए ये so we you know express a condition that may be true or untrue, that may be possible or not possible. To do that in subjunctive mood. याद रखिए subjunctive mood. अच्छा हाँ, पहले moods को डिस्कस कर लेते हैं. Verbs has three moods. Verb के तीन moods होते हैं, subjunctive, indicative और imperative. ये बहुत आसान है. In imperative moods we make request and give orders. जैसे इस तरह के जुमले, प्लीज कम हियर, और यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, और गो देयर, दिस इज एन ऑर्डर, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड. तो ये ऑर्डर्स देना, रिक्वेस्ट करना, ये इम्पेरेटिव मूड में होता है. इंडिकेटिव मूड में हमारे ज़्यादातर जुमले होते हैं. सब्जंक्टिव मूड में या तो हम पर्पस एक्सप्रेस करते हैं. मसलन वी ईट दैट वी मे लिव, ये एग्जाम्पल आगे आएगी जब हम मे डिस्कस करेंगे. हम क्यों खाते हैं, क्या मकसद है खाने का, ताकि हम जीवित रह सकें. पर्पस. इसी तरह से विशेस एंड डिजायर्स, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जिसे हम कहते हैं काश तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम लंबे समय तक जिंदा रहो. तो ये विशेस एंड डिजायर्स हम सब्जंक्टिव मूड में एक्सप्रेस करते हैं. एंड यूजुअली कंडीशंस विच मे नॉट बी ट्रू, विच आर इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकती. उसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी, इसलिए मैं अभी एग्जांपल नहीं दूंगा टाइम बचाने के लिए. तो अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये सब्जंक्टिव मूड बना रहा है. इफ सॉरी, इफ इट
should rain, they will not come. अब हम इसको कैसे हिंदी में समझेंगे? वैसे हिंदी से इंग्लिश समझनी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कहीं कहीं तो ये काम कर जाता है, कहीं कहीं ये फार्मूला काम नहीं करता, तो हमें फिर परेशानी हो जाती है. इफ इट शुड रेन, दैट इज, मतलब सीधा सीधा यही है, इफ इट रेन्स. लेकिन in order to change the mood of the verb, we say if it should rain. जैसे हम उर्दू में कभी कभी कहते हैं ना, अगर बारिश हो जाए, तो फिर वो कभी नहीं आएंगे. They will not come. हो जाए, it has not yet rained. It may or may not. तो ये तो दोनों ही तरह की बात हो गई. And let's see another example. If he should see me here, he would be annoyed or angry. If he should see me here, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल हो सकती है या नहीं भी हो सकती. यानी अगर वो मुझे यहाँ देख ले, अब हम इससे ये नहीं कहेंगे इफ ही सीज मी हियर. नो, इफ ही शुड सी मी हियर और इफ ही सॉ मी हियर, अगर उसने मुझे यहाँ देखा, ही वुड बी एंग्री. ये तो फिर इंडिकेटिव मूड हो जाएगा. इफ ही शुड सी मी हियर, ही वुड बी एंग्री. अगर वो मुझे यहाँ देख ले, तो क्या होगा? वो एंग्री होगा. तो शुड सी मी. अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती. समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. आई शुड गो इफ आई वर यू. यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जाता, और ये संभव ही नहीं है कि मैं आपकी जगह हो सकूं. आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी मी. सो आई शुड गो इफ आई वर यू. तो वो कंडीशंस, जब हम रिजल्ट किसी का डिस्क्राइब करते हैं ऐसी कंडीशन का जो इम्पॉसिबल हो, तो उसमें पास्ट में वॉज की जगह वर लगाते हैं. इफ आई वर यू. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूं इसकी. ही बिहेव्ड एज दो ही वर द मास्टर ऑफ द हाउस. यानी वो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो घर का मालिक हो, जबकि था मालिक नहीं था वो. तो यहाँ ही के साथ वॉज न लगा के वर लगा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट द मास्टर, बट ही वॉज बिहेविंग लाइक अ मास्टर. सो एज दो ही वर द मास्टर, ये भी एक तरह का कंडीशनल ही है, मगर छुपी हुई इसमें कंडीशन है. एनीवे, तो ये है आपका शुड. यू नो, द मोस्ट कॉमन यूसेजेस ऑफ शुड. अच्छा, अब एग्जाम्स में यूजुअली देखिए, ये सब तो जब ये मूड बनाता है या रिपोर्टेड स्पीच में शैल के पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ होता है, तब एक्चुअली ये एक ऑक्सिलरी होता है सिंपली. ये कोई वो नहीं होता, यानी मॉडल नहीं होता. मॉडल तब होता है जब कुछ ऐड करे उसके मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में. जैसे पहले हमने देखा, एडवाइजेबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन है, ऑब्लिगेशन है, तो मॉडल होता है. तो एग्ज़ाम में जो फिलअप करने के लिए आते हैं, तो वो उसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इस तरह के नहीं आते. ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ये चीज़ बताई. सो लेट्स चेक द टाइम. Yes, we can perhaps discuss one more model before we Battery level 50%. start the second part of the video. So next in our list is would. अब आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स आप समझ चुके हैं, तो वी विल क्विकली मूव. देखिए, would is used to describe the result of something, you know, the result of something done in future. Something done in future, याद रखिएगा. uh, you know तो जैसे कि
it would add to the vocabulary. Such an exercise would add to the vocabulary of the students. तो इस तरह की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के वोकेबलरी में ऐड करेगी, हेल्प करेगी. तो विल नहीं कहेंगे, वुड कहेंगे. पीछे की कंडीशन हमने नहीं बताई, वो कुछ भी कर लें. मिसाल के तौर पे इफ द स्टूडेंट्स look up 5 words every day in the dictionary, it would add to um, their vocabulary. अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं हर रोज़ 5 वर्ड्स डिक्शनरी में देखें तो उससे उनकी वोकेबलरी बेहतर होगी. ये उसका रिजल्ट ये होगा, और जाहिर है ये वो फ्यूचर में ही करेंगे. दे हैव नॉट येट स्टार्टेड डूइंग इट, बट इफ़ दे डू इट, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट फ्यूचर में डिस्क्राइब किया जाएगा. सॉरी, वुड से डिस्क्राइब किया जाएगा. Okay, we will have more examples of it in future later on. First, अच्छा, अब हम कुछ और मीनिंग, कुछ और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ और मीनिंग्स देखते हैं, स्पेशली व्हेन इट सर्व्स एज अ मॉडल. देखिए, one meaning which it adds to the different verbs is willingness. Willingness, यानी I would do it if she asked me. ASKED. I would do it, यानी I will willingly do it. अगर उसने मुझसे कहा तो मैं कर दूंगा, ये कोई उसमें मुझे परेशानी नहीं है. यू नो सो विलिंग, I'll be doing it willingly. अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूसेज है वुड का. वुड is used to describe a habitual action in the past. ये आपने अक्सर स्टोरीज में पढ़ा होगा, और जैसे उर्दू हिंदी स्टोरीज आप पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का टेक्स्ट आता है ना कि कभी वो खिड़की की तरफ देखता, कभी दरवाजे की तरफ, कभी उठ के टहलने लगता, कभी बिस्तर पे बैठ जाता, कभी लेट जाता, ज़रा सी आवाज़ पे चौंक पड़ता, फिर अचानक उसने देखा कि घड़ी में 12 बज रहे थे. तो ये करता करता करता, ये जो आ रहा है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैबिट इन द पास्ट. यू नो And in English, to express this, we use would. For example, he would bite his nails every time he was worried. ऐसा होता है ना, यानी जब भी वो परेशान होता तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता या अपना नाखून चबाने लगता. He would bite his nails every time he was worried. ये उसकी आदत थी. कुछ लोगों की इस तरह की आदत होती है. इसकी और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी, लेकिन याद रखिएगा, there is often an extra stress on would in this use in spoken English. That is habitual action in the past. ये बहुत कम आएगा आपके. अच्छा, अब देखिए, the third thing to remember about would is probability. अच्छा, अब ये दो चीज़ें समझ लीजिए. आमतौर पे लोग कंफ्यूज करते हैं इन दो वर्ड्स को, पॉसिबल और प्रोबेबल, यानी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ये एक दूसरे का सिनोनिम समझते हैं, जबकि गलत है ये. पॉसिबल तो वो है जो संभव हो सके, असंभव तो कुछ भी नहीं है. कुछ भी संभव हो सकता है, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी हो सकता है भाई, यानी कोई करिश्मा हो जाए, और होता है. यू नो बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आदमी बच भी जाता है, जबकि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बचना ही नहीं चाहिए था, मर जाना चाहिए था, बचा क्यों? बट इट इज़ पॉसिबल. जब जिसकी ज़िंदगी जब तक है तब तक वो मर नहीं सकता. बट प्रोबेबल इज समथिंग एल्स. प्रोबेबल मीन्स लाइकली, यानी जिसकी संभावना अधिक हो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गालिब. यानी आपने मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना होगा, उनका तखल्लुस यही था. लेकिन गालिब गुमान जिसे हम कहते हैं, यानी कि
जो हमारा गेस है, स्ट्रॉन्ग गेस, तो वो संभावना प्रकट करने के लिए वुड इस्तेमाल होता है. You know, it would expresses probability. Remember, I repeat, probability. So let's see an example. You would need about an hour to finish this essay. Suppose you are writing an essay of about 300 words. 300 वर्ड्स में आप एक essay लिख रहे हैं. तो मैं कहता हूं कि भाई आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा ये essay लिखने में. यानी मतलब this is probable, this is likely that you will take 1 hour to finish this essay because you have to write 300 words. Okay, so probability. Then wishes and desires. Wishes और desires को भी express करता है would. मसलन, I would like to visit Agra one day. I would like to visit Agra one day. That is, this is my desire. यानी ये इच्छा है मेरी, बड़ी ख्वाहिश है, दिल चाहता है कि एक ना एक दिन मैं आगरा देखूं कैसा है ताजमहल. हाँ, रिमेंबर दैट अगर हम ये कहते हैं आई वुड विजिट आगरा वन डे, तो ये दिस इज वेरी अनयूजुअल इन मॉडर्न इंग्लिश. विदाउट लाइक द यूज ऑफ वुड इज वेरी अनयूजुअल. इसलिए एंड इट साउंड्स ओल्ड फैशन्ड. इसलिए अगर आप लेटेस्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो इंग्लिश जो आजकल बोली जा रही है, तो आई वुड लाइक टू विजिट आगरा वन डे. वुड के साथ लाइक का प्रयोग करें जब भी आप, इफ यू वांट टू express your desire. So this was the third. Now अब कुछ repetition होगा. Let's see some more meanings of would. Now in reported speech, would is used as the past tense of will. जैसे he said he will come, तो he said he would come. You know, आजकल इन करंट इंग्लिश, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वुड जो है पहले तो शैल के लिए शुड इस्तेमाल होता था, विल के लिए वुड. अब विल और शैल दोनों के लिए वुड अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो गलत नहीं. यू नो, करंट इंग्लिश यूसेज यही है. तो ये तो रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह से भी इस्तेमाल हो जाता है, बट ये तो फिर ऑक्सिलरी है, ये कोई मॉडिफायर यानी मॉडल नहीं है. अब देखिए, another important um, um, meaning which it adds to the main verb, which is firm determination. दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं, पक्का इरादा. He would have his own way. यानी कि he would have his own way. वो अपने ही तरह से चलेगा. ये नहीं कि जो चाहे उसे जैसे चाहे चला ले. No, he would have his own way. That's the kind of officer he is. That is, he would have is equal to he was determined to have. ये यूजुअली तो पास्ट में ही इस्तेमाल होता है, यानी ही वुड हैव हिज ओन वे, वो अपनी ही तरह से चला या चलता. तो आम, आम, लेकिन ये है कि प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको रख सकते हैं. फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कोई नया फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर आए, तो आप कहें कि भाई ही इज़ जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर. पॉलिटिशियन तो ऐसे होते ही हैं, बिक जाएगा जब जोर पड़ेगा, पैसा मिलेगा उद्योगपतियों का, सबका, इनका उनका, तो फिर ये है कि वो उनके हिसाब से चलने लगेगा. और कोई कहे कि नो, ही वुड हैव हिज ओन वे. ही इज़ नॉट द टाइप ऑफ मैन हु वुड बी कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड बाय अदर्स. नहीं, ऐसा नहीं है. वो
अपने हिसाब से चलेगा, इस तरह का आदमी नहीं है कि वो दूसरों के हिसाब से चले. सो फर्म डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं. फ्यूचर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी कह सकते हैं कि जैसे पीछे एग्जांपल दी, ही वुड हैव हिज ओन वे, ये ऐसा सेंटेंस है कि इसको पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी रखा जा सकता है. जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी किंग के बारे में बताएं कि देयर वाज अ किंग एट दैट टाइम एंड there was a situation of war. The ministers advised him to, um, you know, strike a compromise with the opposite king. उन्होंने कहा कि भाई समझौता कर लो, हम लड़ नहीं पाएंगे, ये वो है. But the king was very brave and he would have his own way. He was determined to have his own way. He wanted to fight and die in the battlefield. तो मतलब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ही वुड नॉट लाई. ही वुड नॉट लाई यानी वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं बोलेगा. यू नो ही इज डिटर्मिन्ड नॉट टू टेल अ लाई. अच्छा, जैसे आपको बताया, वुड यू नो एक्सप्रेसेस a habitual action in the past. इसकी कुछ और एग्जांपल देखिए. He would sit and dream all day. यानी वो सारे दिन बैठा रहता और सपने देखता रहता था. He would sit मतलब वो बैठा करता था. और मिसाल के तौर पे he would sometimes fall asleep in the most pathetic part of my sermon. तो जो सरमन में देता था, जो व्याख्यान, जो खुतबा जो मैं देता था, तो उसमें जो बहुत ही पैथेटिक पार्ट्स होते थे, जो दुखद पार्ट्स होते थे, उसमें वो सो जाता था, सो जाया करता था. um, Shazi plus 91965 Shazi. Open camera. Shazi. Stop recording video button. sorry. So you know the old woman would come for, okay, let's leave it. Now another example of this habitual action in the past is after breakfast he would generally take a walk. you know After breakfast he would generally take a walk. यानी कि उसकी क्या आदत थी कि नाश्ते के बाद वो एक थोड़ी देर टहलता था. Now willingness we have discussed. One more example of willingness जो कि थोड़ी सी, but let's see it. He said he would do his best. तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, he promised that he would do his best. That is, he was willing to do his best. Uh, Now then, would is also used in subjunctive mood, like should, to express usually those conditions which may not be possible. क्योंकि इन एग्जांपल्स को देखें. If he were here, I would tell him. कंडीशन क्या है? इफ ही वर हियर, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसी कंडीशन या ऐसा रिजल्ट जो कि इम्पॉसिबल हो, तो उसमें ही के साथ वॉज नहीं लगाते, वर लगाते हैं अगर पास्ट की बात हो तो. इफ ही वर हियर आई वुड टेल हिम, यानी अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता. बट ही इज नॉट हियर. आई वुड डू इट इफ आई वर यू, ये वैसी ही एग्जाम्पल है जैसे पीछे शुड की आई थी. दैट इज आई वुड विलिंगली डू इट अगर मैं आपकी जगह हूं तो, बट दैट इज नॉट टू बी.
वो नहीं है, वो संभव नहीं है. So, you see, what is the case now? We have completed would and should. Now, you see, because the video has been too long, so yes, we would stop here and we would discuss the rest of the modals in part two of um, the the same video. Hope you would watch part two as well. This is very interesting discussion. So till we meet again, take care and goodbye. Stop recording video button.